is the Vaitala temple. Okay, Vaitala मंदिर सेटा तो सेतरे से चामुंडा की माने देवी को पूजा हुए. So that is another sect. ठीक है जी, तांकर भी मान्यता सब अलगा, but still then central theme is same. Okay, that is they would also like to get or achieve self realization. Okay, Yes, sir. just I will actually I forgot to put on this recording thing, so I'll just again recap in just 1-2 minutes. हमें आज कौन पढ़ लूँ. So we started with who is a Hindu. Okay, अच्छा ये जो handwritten note टा एटा मु class परे I'll give you the PDF टा दे देबी सेतरे. तो आपण जदी if you want to refer anything you can. Principal aim of Hinduism, okay, that is to get or to achieve self realization. Okay, এটা first জিনিস আমি দেখি. So and that can be achieved in many ways. So को way रे particular way रे आपण achieve करिवे सेटा ना ही धर्मशास्त्र कहूची ना ही कोर्ट कहउछदी. Okay, that is the reason court has never given a definition of who is a Hindu. ठीक अछि, आमे वेरियस जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट को नहीं की गोटे लॉजिकल ये बिल्ड अप करिया पे चेष्टा करछु. नहले सेंती प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ हिंदू आज पर्यंत प्रॉपर्ली दियाइनी. आमे देखिलु प्रथम ट्राय लास्ट क्लास रे आमे सेटा देखिलु कि जस्टिस गजेंद्र गदकर प्रथम सेटा चेष्टा करथिले एंड ही गेव ए वेरी वाइड डेफिनेशन. ओके, तो इन द पिन पॉइंटेड डेफिनेशन हबाई डिफिकल्ट एंड सुप्रीम कोर्ट हैज मेनली सेड ए जदी ए टाइप रो क्वेश्चंस पडिला हु इज अ हिंदू टाइप रो. ओके, सेथरे गोटे इंस मन रखिबे court supreme court has numerous times said that Hinduism is rather a way of life. ठीक है जी, that has been misconstrued by some political parties. तो सेमान तो एमती भी कहउछन कि हिंदू तो रिलीजन ही नो, सेटा तो वे ऑफ लाइफ. ओके, तो ता संगे जहां भी कले चलियो सी वे ऑफ लाइफ कहउछंती कोर्ट इन अ डिफरेंट वे. ओके, सी ताको या कहउछंती कि से बहुत एसिमिलेटेड. ठीक है, जस्ट लाइक वी सॉ इन द केस ऑफ दैट बीफ. ओके, जदी गोटे लोक से बीफ भी कंज्यूम करू, जोटे हिंदू लोक से बीफ भी कंज्यूम करछि, जोटा मेनली अपन देखिबे इन सम प्लेसेस ऑफ नॉर्थ ईस्ट, मेनली इन केरला. ओके, एंड अदर प्लेसेस आल्सो. तो तार किछि लाइक धर्मटा पळुनी, ही स्टिल रिमेन्स अ हिंदू. ओके, तो एई जो केते गुडा इंपोर्टेंट जिंस अछि तार जो केसेस जोटा ता संगे रिलेटेड अछि सेटा अपन को धरिबार अछि. सो देन वी केम टू एग्जांपल्स. ओके, दैट ए हिंदू कैन अचीव सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू वेरियस वेज. तो किछटा एग्जांपल हमें देखिलु भक्ति, ज्ञान और कर्म. By devotion, by knowledge acquisition and spreading, or by doing the work. Okay, काम करिकि भी से self realization आडू जाय पाछ. तापरे other beliefs like belief in formless or God having a form or soul having a form, nirguna and saguna. Okay, through tapasya, through penance, meditation. ठीक अछि. तापरे सदगृहस्थी जो माने सेपट साइड को जिया पे चाहनांती. ओके, एस्थेटिक हो पे चाहनांती. तो से माने फैमिली लाइफ रे तांकर जहा रिस्पांसिबिलिटीज सेटा ठीक रे करिवे, दैट इज सदगृहस्थी. सो दे आर मूविंग टुवर्ड्स सेल्फ रियलाइजेशन. ओके, और बिकमिंग एन अखंड ब्रह्मचारी. ये सेलिबेसी को मींस नो फिजिकल कांटेक्ट विद अ वुमन. ओके, तो अखंड ब्रह्मचारी है कि से रहबे. तो दीज आर आल्सो डिफरेंट वेज ऑफ अचीविंग योर सेल्फ रियलाइजेशन. तापर ऐसा एनी हिंदू कल्ट, डिनोमिनेशन और सेक्ट aiming and working towards achieving self realization in any way. Okay, this is most important. को भी वे हो, जिमती कि हमें एग्जांपल ने लू. ओके, द वीरशैवस और लिंगायत्स करो. ओके, both of them are Shaivite sects, but they differ in the point that Lingayats very strongly they denounce or they do not believe in the worship of Vishnu, whereas the Veerashaivas, although they are also a Shivite sect, but they are still tolerant about it, right? Will be considered within the Hindu fold. How that is the case law में जोड़ा देखिलु in Guramma versus Malappa. Okay, 1964 Supreme Court case. The court held that even if Hindu sects have completely different rituals and rules, okay, they will still be considered under the Hindu fold. How तारा example दे section 2, okay, clause 1, subclause A of Hindu Marriage Act. सेतरे मेंशन कराई जे वीरशैव जो लिंगायत्स करो, तांकर रिचुअल्स अलगा, तांकर बिलीव्स पूरा अलगा. Okay, although they are both Shivite sects, okay, still you will consider them as Hindus. Okay, Hindu fold से माने जाते हैं. कुछ पहले. So that is the what we have studied till now. Now let us go to development of Hindu religion. So Hindu religion रो development बहुत time हैला हिची and it is a evolving religion. Okay, initially जेमती थिला, let's say Rigvedic period रे, okay, it was more flexible. Rigvedic period रे. Later Vedic period रे it became very rigid. Okay,
आस्ते आस्ते ट्रांसफॉर्मेशन रिफॉर्मेशन एगुड़ा सब से हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट्स फॉर एग्जांपल आपण कहबे जेतेबेले अंडर द इन द लेटर वैदिक पीरियड सेठी कोन हैला ना ऋग्वेदिक पीरियड रे ओके दैट इज व्हेन द बिगिनिंग मोर एम्फोसिस वाज गिवन ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द कोन जे डिवोटी एंड हिज गॉड आपण केमिति पूजा करछन आपण पे बहुत पैसा अछि कि नहीं आपण ऑफरिंग्स बहुत करछन कि नहीं आपण यज्ञ बहुत करछन कि नहीं सेटा इंपोर्टेंट नथला आपण को भावटा इंपोर्टेंट थिला योर कनेक्ट बिटवीन योर गॉड एंड यू बट जेतले लेटर वैदिक पीरियड आसिला मटेरियलिज्म आउरी बढ़िला सो दिस यू नो ब्राह्मण्स व्हाट दे डिड द प्रीस्ट माने थिले से माने ताको मटेरियलिस्टिक कर देले तो आपण को एति की यू नो डोनेशन दवा पे पड़िबो कि एति की आपण को ऑफरिंग्स दवा पे पड़िबो व्हिच बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर द कॉमन मैन आउ भी बहुत रीजंस अछि से माने संस्कृत यूज कले जोटा को देव भाषा को लैंग्वेज ऑफ द गॉड्स ओके किंतु दैट वाज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड और एमाने भी ताको स्प्रेड करिया पे देलेनी एमाने निजो पाखरे रखिले ओके बोले लोकल लैंग्वेजेस किंबा जोटा पॉपुलर लैंग्वेजेस थिला लाइक पाली थिला प्राकृत थिला ओके तो अर्धमगधी थिला एगुडा तो जैनिज्म बुद्धिज्म स्टार्टेड फ्रॉम देयर ए जो एक्सप्लॉयटेशन हला कॉमन लोकर सी भाबिला कि मते जदी आउ गोटे रिलीजन मिलंता जो कि मते इक्वालिटी दियंता ओके काहे ना जो वर्ण व्यवस्था जेतले हे गला ओके वर्ण मीन्स कलर एक्चुअली दैट इज नॉट एग्जैक्टली कास्ट जाति एंड वर्ण टू आर डिफरेंट थिंग्स बट एनीवे तो से सबु से हिस्ट्री रू हमें जदी देखि देखि आसीबा ओके हिंदुइज्म ऑलवेज हैज इवॉल्वड सो देयर वुड बी सम रिफॉर्मर सेटिके रिफॉर्म आनले तो आउ थरे बेटर जिंसो लोक एक्सेप्ट कले ओके तापरे आउ किछि वर्ष परे आउ केतेटा रिफॉर्मर्स आसिले दे अगेन रिफॉर्म द रिलीजन सो इन दैट वे Hindu the religion has developed. Okay. So first point, since inception, Hindu religion has permitted religious innovations since inception. Hindu religion has permitted Hindu religion has permitted innovation okay Hindu religion has permitted innovations thereby adding new dimensions thereby adding new dimensions thereby adding new dimensions okay new dimensions to the religion okay the religion आस्ते आस्ते से हिसाब रे सेटा चेंज हला जहा रिक्वायरमेंट सोसाइटी रो से हिसाब रे राइट एग्जांपल ब्रह्म समाज आर्य समाज द राधा समाज okay brahma samaj arya samaj all of you know example reforms by okay arya samaj brahma samaj then other movements were also there okay that is the radha swamis the satsangis okay etc okay satsangis जोटा हमें पढ़ी थिलु फर्स्ट केस रे तो स्वामी नारायण ओके सेक्ट संगे जो माने कनेक्टेड था so these are some examples of reforms in the Hindu religion और भी बहुत reformers थे okay many more reformers were there so some of the most prominent we have okay so एथरे कौन होतिला एक्चुअली लेट्स से फॉर एग्जांपल आर्य समाज okay बेसिकली जेते बेले
reform सेठी हला against caste. They wanted to okay unify the Hindu society. तेणु से माने इंटर कास्ट मैरिज को प्रमोट कले ता पई से माने प्रॉपर व्यवस्था कले कना से टाइम रे इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू हैव इंटर कास्ट मैरिज आज भी जदी ओके आज तो मोर और लेस सोसाइटी इज मोर टॉलरेंट बट स्टिल देन इंटर कास्ट मैरिजेस स्पेशली रूरल और सेमी अर्बन एरियाज रे इट इज पॉसिबल ओनली इन आर्य समाज टेम्पल्स ओके से माने तार अलग व्यवस्था करंती राइट सो एटा गोटे एग्जांपल है सेंती सोसाइटी रो जहा जहा सोशल चेंज पे रिक्वायरमेंट थिला तो से टाइम रे द हिंदू रिलीजन हैज एक्सेप्टेड इट ठीक अछि सो रिफॉर्म जोड़ा में एक्सेप्ट करिछु राइट तापर नेक्स्ट पॉइंट ऑलरेडी वी हैव सीन दिस पार्ट एटा आउट के डिटेल रे हमें देखिबा कि आमे जो हिंदू कहूछु लीगल टर्म्स ओके हिंदू कोड बिल हिसाब रे लीगल टर्म्स में हिंदू कहूछु दैट वी आर आल्सो इंक्लूडिंग नॉन हिंदूज देयर जेमति कि जैनस बुद्धिस्ट सिख्स ताको हमें इंक्लूड करूछु सो सेही कांसेप्ट कोठु आसिला व्हाई जैनस बुद्धिस्ट एंड सिख्स आर इंक्लूडेड अंडर द हिंदू फोल्ड फॉर लीगल पर्पसेस ओके बोथ कोडिफाइड और अनकोडिफाइड ओके हिंदू कोड रे राइट और हिंदू लॉ रे राइट सेथरे हमें देखिबा कि व्हाई दिस followers of Jainism, Sikhism, and Buddhism are included in the Hindu fold. So this is another question. Okay. So take down that is the principal question, or you can say that is the heading. Next heading hela. Why Buddhists, Jains, and Sikhs are treated as Hindus from the legal point of view. तांकर कॉन्सेप्ट अलग अछि जोड़ा में देखिबा ठीक अछि सो तांको कोन पई आपण सेम रे रखिबे तांको पे अलग कोड ही पता बिकॉज सी फॉर एग्जांपल Jainism completely rejects the concept of the Vedas. Vedas रे और Vedic literature रे जहाँ सब पढ़ाई ची okay Jainism does not believe in it. It does not believe in God in that sense. Okay. Buddhism is a more practical religion. So Lord Buddha से कौन करते थे से ये जो philosophical issues रे बेसी जाई नथले. Okay, जोटा कि Lord Mahavira करते थे. Right. Some questions were like, is the soul for real? आत्मा कौन ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल कौन लोक जो चली जाऊँगी आम जमी कहूँ आत्माटा ओके केबे भी सेटा डिस्ट्रॉय हो परियो से आउ को फॉर्म को पढुछ आउ को बॉडी की पढुछ ओके तो दीज आर ऑल फिलोसॉफिकल क्वेश्चन जोटा कि वैदिक लिटरेचर उपनिषद रे गुडा डील हेछि ओके बट एनीवे जा भी हो सो बुद्धिज्म भी ओके ए जो कास्ट एंड ऑल दिस एतरे बिलीव करेनी ठीक अछि सिखिज्म originated as a revolt against Hinduism. Okay, तेणु they are different from the basic or the core okay Hindu religion, but still then तांकु एका संगे काहे की grouping कराई छै. So that is the question we are dealing with from legal point of view. Okay, both the uncodified and codified Hindu law ओके माने कोडिफिकेशन आगुरु जो हमर लॉटा दिला सेटा अनकोडिफाइड लॉ दिला सेथरे भी से माने हिंदू हिसाब रे हम को रखि ओके बोथ द अनकोडिफाइड एंड कोडिफाइड हिंदू लॉ इंक्लूड्स Jainas, Buddhists, and Sikhs. Both the uncodified and codified Hindu law includes okay Buddhists, Jains, and Sikhs.
Got it? ठीक है. So just basically तार जदि मु कहबी तीनटा हमर तंग हिस्ट्री ऊपर किछि लिखिया दरकार नहीं. They have a different ideology from okay Hinduism, but all of them fundamentally run after the same thing or want to achieve the same thing, that is realization of self. ताकू किए मोक्ष कहूची किए आउ कोन कहूची, concept टा किंतु सबुर same. Okay, and apart from Hinduism, these three are all monotheistic religions. Okay, so they believe in one God. ସେମାନେ ଗୋଟେ ହିଁ God ରେ believe କରନ୍ତି, right? So monotheism means belief in one God. Okay, polytheism means poly माने more than one. जेमति हमें देखुछु आगु को पढिबा हमें. Okay, bigamy, polygamy, polyandry. Poly means more than one. ठीक अछि. बाई हला टू. ठीक अछि. तो सेही हिसाब रे तो जो रिलीजन रो मोर देन वर्ड को वन गॉड रे और गॉडेसेस रे बिलीव करंती. ओके, तो मेगुडा हला आपनकर पॉलीथेइस्टिक रिलीजन्स. ओके, सो हिंदुइज्म टा से राइट. हिंदुइज्म रे लॉट ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस आर देयर. ठीक अछि. तो आपण सुनथिबे बहुत जण कहउथिबे हमरो 33 कोटी देव देवता अछन. ओके, 33 crores. Okay, but that is the wrong interpretation. 33 crores नांदी से कोटी जोटा कहउचंदी. ओके, तो दैट इज बेसिकली इन चेस्ट संस्कृत. आपण जदि के संस्कृत जानिथिबे एबे जो संस्कृत पढा होची दैट इज नॉट वैदिक संस्कृत. ओके, वैदिक संस्कृत रे ताको लेखा आइछि, ताको मिस इंटरप्रेट कराइछि. दैट आर 33 kinds of gods are there in various Vedas and in the Puranas. This 33 category of gods are given. Different categories of gods are there. Okay, तो सेटा टिके मन रखियो. Not related to law but common sense general जिनसटा जानिबा कथा. Okay, के केते जानना थे कहते कि अपन तो everything you worship everything. ग्रास रो आरंभ करी कि celestial bodies पर्यंत सब को अपन worship करछन. सेत में 33 crore ही जंदी. 33 crore no, 33 types of gods and goddesses are there. Okay, according to Vedic literature. बुझ पड़ले. So whatever be the case, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड सिखिज्म ताको हमरा ओके हिंदू लॉ भितरे रखाई. ठीक अछि. ऑल्दो तांकर बिलीफ्स रा अलगा एंड दिस ऑल थ्री आर ओके दे आर सम काइंड ऑफ ए डिसेंट और सम काइंड ऑफ ए रिएक्शन टू हिंदुइज्म. ओके, और टू सनातन धर्म और टू ब्राह्मणिज्म अपन जदि सेमति कहि पारे. बुझि पड़ले. सो नेक्स्ट पॉइंट लिखंदो. टू सम अप, तो ए टोटल जा डिस्कशन कलु तार समरी टा बे रखियो. टू सम अप, any person who is Hindu, Jain, Buddhist or Sikh by religion is a Hindu. Okay, legal terms. Okay, any person who is a Hindu, Buddhist, Jain or Sikh by religion is a Hindu. If एटी अपन निटा लिखिबे. गोटे नाम इफ लिखुछु आउ केते जगह रे देखिबे केतेटा बुक रे इफ लिखाई दिबो. आई डबल एफ. इफ माने कोन गोटे एक्स्ट्रा एफ जदि मु लगुछु ता माने एटा हला इफ एंड ओनली इफ. ओके, एई दीटा की तीनटा की जेतेटा मु पॉइंट्स कहूची से सबुडा जदि आपनकर होउची ताहले जाईकी ओके दोस ऑल द क्राइटेरिया आर फुलफिल ताहले आपन ताको हिंदू कहबे. ओके, सो कौन कौन रोची. नंबर 1
अच्छा आउ गोटे जिनस भी लेट मी टेल यू परीक्षार जो फॉर्म बाहर प्राय पिला ताको पढ़ते ठीक अच्छे नोटिफिकेशन आप सेटा टिके आपण जेथर परीक्षा देइचंदी ठीक अच्छे बट नोटिफिकेशन थ्रेड बेयर टिके पढ़िबे गोटे गोटे पॉइंट तार पढ़िबे तो सेति गोटे पॉइंट अच्छी देखिए कि ओपीएससी रो सबु परीक्षा रे रिटर्न परीक्षा रे आपण स्टैंडर्ड इंग्लिश न्यूमरल्स रो यूज करिवे ठीक अच्छे तो दैट इज 1 2 3 4 मु जो एबे एबीसीडी ओडा लेखुची एगुडा भी एक्चुअली अलाउड नो से ठीक अच्छे तो सो मते तो 1 2 3 एमती बट ठीक अच्छे एटा तो चलू एटा किछ असुविधा नहीं बट डोंट यू नो राइट रोमन न्यूमरल्स एंड ऑल स्टैंडर्ड इंटरनेशनल ओके न्यूमरल्स लेखा होची यू नो 1 2 3 4 सेतर लेखा होची ओके सेटा गोटे जिंस आ गोटे हला पेन पेन सेठी क्लियरली लेखा हिची आपनकर ओके ब्लू रॉयल ब्लू कि ब्लैक पेन यूज कर परियो ता माने नो कि आपण दीटा पेन यूज करिवे द लॉट ऑफ पीपल से मु हेडिंग देबी ब्लैक रे और लिखिबी तापरे हमर ब्लू रे अंडरलाइन करिबी ब्लैक रे वी डोंट हैव द लग्जरी ऑफ दैट टाइम ओके सेते समय नै नोट्स बने पे करिबे ठीक अछि बट सेठी गोटे पेन रे सब लिखिया अछि टाइम इज ऑफ ओके इमेंस वैल्यू ठीक अछि त सो कौन कौन तीन टा पॉइंट लेट अस सी नंबर 1 फर्स्ट जिंस if he practices professes or follow any of these religions okay तीनटा जिंस कहला okay if he practices professes or follows कौन है तीनटा we will see that okay if he practices professes or follows any of the above religion ओके एटी गोटे जिनस मन रखिए आम जेहेतु ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करूँ ओके तो आमर प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस रे आमे ताको डिफरेंट वे रे यूज करूँ गोटे नाउन हिसाब रे यूज करूँ गोटे वर्ब हिसाब रे यूज करूँ ओके तो प्रैक्टिस जो फुटबॉल प्रैक्टिस करने जीवी ओके से पीआरएसी टीआईसी आपण लिखुचंती किंतु प्रैक्टिस जो एडवोकेट प्रैक्टिस कर वर्ब हिसाब रे आपण नउचंती ब्रिटिश इंग्लिश रे सेटा एस आमे लगाउछु अमेरिकन इंग्लिश रे दीटा जाक सी ओके सो सेति पई डिफरेंट आमे तो लिखुछु ब्रिटिश इंग्लिश तनो हमकु सेटा मन रखिया पे पड़िबो ओके प्रैक्टिसेस प्रोफेसेस और ओके फॉलोज तो तीनटा रे कोन प्रथम हैला प्रैक्टिस जहाँ जहाँ कुहाई मु करूची एक्चुअली इन एक्शन ठीक अछि तो सो आई एम डूइंग इट बाय एक्शन सेटा हैला प्रैक्टिस ओके तापर हैला प्रोफेस ठीक अछि मु एक्चुअली कर्म रे न करि पारे बट मु एग्री करूची सेतरे मु प्रोफेस करूची से जिंसटा ठीक अछि मु कहूची कि हां ए करिया कथा मु भी एग्री करूची सेटा निजे न एक्चुअली करि पारे ठीक अछि सो सेटा प्रोफेस और फॉलोज ठीक अछि सो फॉलोइंग में कौन होची बेसिकली कि किछि गोटे रूल्स दिया हिची ओके यू आर बेसिकली फॉलोइंग यू आर ओके विथ दैट रूल ओके एटा में कॉन्स्टिट्यूशन रे फंडामेंटल राइट्स पढिबा सेते बळे हमें देखिबा एतला आर्टिकल 25 26 आडू जिबा फंडामेंटल राइट्स रे रिलीजियस फ्रीडम रो राइट्स गुडा सेते बळे हमें ए टर्म्स रा आउथरे देखिबा ठीक अछि तो एई एनी ऑफ दीज ओके सेठी प्रोपागेट टा भी अछि वर्ड टा ओके जदी आपण स्प्रेड करछन आपण रिलीजन एठी देइनी सेटा प्रैक्टिस प्रोफेसर ओके फॉलोज एनी ऑफ द अबव रिलीजन माने हिंदू हिंदुइज्म बुद्धिज्म जैनिज्म की सिखिज्म तो एटा हला नंबर 1 सो ही इज ए हिंदू बाय रिलीजन ओके तापरे सेकंड पॉइंट अथवा कोन रहउची ही रिमेन्स ए हिंदू इवन इफ ही डज नॉट डू एनी ऑफ द अबव माने ना प्रैक्टिस करची ना प्रोफेस करची ना फॉलो करची ओके he still continues to okay be a hindu जेमति कि हमें कहलु से ना प्रैक्टिस उल्टाटा भी जदी कला बीफ भी खाई देला ताहेले भी से ओके हिंदू ही रहइबो राइट सो सेही पॉइंट ता जेतु गोटे बहुत कंट्रोवर्शियल पॉइंट सेटा हमकु प्रेजेंट करिवार अछि जस्ट टू शो दैट जदी किछि चेंजेस होछि एथरे ओके एक्चुअली
तार status as a Hindu does not change. So second point लिखंतु, he remains a Hindu even if he does not कौन या practice, profess, okay, or follow any of these religions. Okay, if he does not practice, profess, or follow the tenets of any one of these religions. Okay, so he will remain a Hindu even if he does not, okay, Hindu by religion say remain kariba. ठीक ଅଛି, like you see this is not endemic to Hindus only, এটা ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି, ସବୁ religion ରେ ଅଛି. ଓକେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ୟୁଏନ ରେ କାମ କରୁଥିଲି, ମକାଉରେ ପୋଷ୍ଟେଡ ଥିଲି ଚାଇନାରେ, ସେଟା ତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ, ମାନେ ଆମ କଲିଗ୍ସଙ୍କ ଭିତରେ there were very few Catholics, okay, ଯିଏ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଆନ୍ତି. And like we were 5-6 from India and 2-3 guys from Nepal, ଯେ କି ହିନ୍ଦୁଜ ମାନେ ଥିଲେ ସେଠି. ତ ତା ଭିତରେ ସେମିତି ଆମର ଏଠି ଯେମିତି ମନ୍ଦିର ଅଛି, ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ସେମିତି ନୁହଁ. ଓକେ, ମକାଉରେ ସେମିତି ବି ହିନ୍ଦୁ ଟେମ୍ପଲ୍ସ ବହୁତ ହି ଛୋଟ, ଆଉ ସେଟା ବି ହିନ୍ଦୁ ଟେମ୍ପଲ ବି କହିହବନି, ଲାଇକ ସର୍ବଧର୍ମ. ଓକେ, କାରଣ ସେଠି ସେମାନେ ଏତେ ରିଲିଜିୟନ କୁ ଏତେ, ଇଭେନ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ବି ଆପଣ ପାଇବା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯିବ ସେଠି. ଓକେ, ସେମାନେ ଏତେ ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ରାଇଟ. ହଂକଂ କୁ ଯଦି ଆପଣ ଯିବେ, रिवर आरपटे, पर्ल रिवर आरपटे, सेठी किसी मंदिर अच्छी, बट एनीवे जा भी हो. सो चर्चेस अच्छी, ओके, बट सेतरे भी बहुत कम लोग जो माने संडे मास को जानती, माने कोन, दे आर पार्ट ऑफ दैट रिलीजन बट दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग पीपल. Exactly like that in Islam, all people do not, okay, go for namaz 5 times a day. There are some devoted people जो माने सेटा करंती, बहुत जण करंती नहीं. ओके, रिलीजियस टेनेंट्स भी बहुत जण मानती, जेमती हमें कहलु बीफ हिंदू बहुत जन खाऊं. ओके, सेमती अल्कोहल बहुत जन मुस्लिम भी कंज्यूम कर, मोर बहुत सांग अच्छा. ओके, जोड़ा कि तंकर फॉरबिडन रिलीजन रे, राइट. ता माने कोन, स्टिल देन दोज पीपल, ओके, यू कैन नॉट से दैट दे हैव लॉस्ट देयर रिलीजन, दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग पीपल. ठीक है, से माने प्रैक्टिस करना से डाला कथा, राइट. So this term, if you go to orthodox places like our headquarter रे मु थिली around 4 months खंडे न्यूयॉर्क रे, ठीक अछि. सेठी जो नेबरहुड रे आमे एठी कोन आपण रे नुवा नेबरहुड को धरंतु जाउछंती. सपोज यू आर स्टेइंग इन ए, लेट्स से मो कथा कहू, मु पारादीप रे रहउतिली. आई वाज ब्रॉट अप एट पारादीप. तापर मु भुवनेश्वर की कटक आसिली. एठी हमें प्रथमे कोन, जेतले हमर नुवा नेबर पाखु को जाउछु, हमें कोन कहउछु तब कि आपण घरटा कोठी. ठीक अच्छे, तो से आम आस्ते आस्ते जानापी पाचु, गोटे आमर सोशल सर्कल आम बनाऊ. इन द वेस्ट इफ यू गो ऑर्थोडॉक्स पार्ट्स रे, सेठी कोन, व्हिच चर्च यू बिलोंग टू, देयर लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ चर्चेस. ओके, लाइक लुथेरन्स माने अछंती. ओके, देन अदर सेक्ट्स आर आल्सो देयर. ओके, सो व्हिच चर्च यू बिलोंग. तो ता माने कोन, प्रैक्टिसिंग लोक थांती जो माने को रिलीजन को पूरा प्रैक्टिस करंती. आउ के जण थांती जो माने कि लाइक से माने एते एक्टिव प्रैक्टिस करंती, बट दे आर पार्ट ऑफ द रिलीजन. ओवरऑल टेनेंट को से मानंती, सब जिंस न मानि पारंती. बुझि परले. सो सेकंड पॉइंट ता सेही मानको पई, he remains a Hindu even if he does not practices, okay, professes or follows the tenets of one of these religion. Okay, so just to get dekhontu, go through what you have written, and if you have any doubt you write with me. ठीक अछि, तो even if I give you the note, you write with me. तो आपण को ठीक, ओके, लेखिबा प्रैक्टिस भी आपण को हेजबो, राइट. So just go through it. If you have any doubts, then ask. Otherwise, we'll go to another concept
that is conversion and reconversion to Hinduism. Conversion and reconversion. Okay, ଆଉ ସେଥିରେ କ'ଣ difference ଅଛି? ତ ମୁଁ shortly ତାକୁ କହିଦେଉଛି। ଯୋଉ ଚାରିଟା ରିଲିଜନ କୁ ଆପଣ ହିନ୍ଦୁ ଫୋଲ୍ଡରେ ଭାବୁଛନ୍ତି, okay, including the heterodox religions like, okay, I told you in the beginning, ଆମର Vedic literature ହିସାବରେ orthodox religion ହେଲା Hinduism, okay, and there are 6 schools of philosophy ଆମେ ସେଟା follow କରୁଛୁ। ये ହେଲା orthodox religion, that is Hinduism basically। heterodox କ'ଣ? HETRODOX, okay, heterodox। heterodox religions କ'ଣ? ଯୋଉଟା ମାନୁ ନାହାନ୍ତି Vedic literature। तो से एंशिएंट पीरियड रे इट इज मेनली कौन? बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। सिखिज्म तो बहुत परे आसिला, बुझि पारले तो ताको हमें केबे केबे हेटेरोडॉक्स रिलीजन्स भी कहू। ओके, मेनली बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। दे डू नॉट बिलीव इन द वेदस, ठीक अछि। वेद जा प्रीच करछि से माने बिलीव करनान से। बट इट तेनु सपोज ए पर्सन इज देयर who initially was a Sikh, then he converted, okay, or he converted into, let's say, a Buddhist, then he converted into a Jaina, so jaha bhi ho, he is in the Hindu fold, ठीक अछि। तो एठी जो हमें कन्वर्शन और रिकन्वर्शन कथा अबे कहिबू, that does not mean that the person has to convert and reconvert from the original religion। that means let's say there is a Hindu person, he converted to Sikhism, he reconverted to Jainism, जहां भी हो तरह से हिंदू हिसाब रे ही अपन ताको नौचन। ओके, इट्स अ केस ऑफ डबल कन्वर्शन जोटा में आगु देखियो। प्लस एथरे गोटे बहुत इंपोर्टेंट केस अछि पर्सनल लॉ रे, स्पेशली हिंदू लॉ रे, with relation to this definition of Hindu, okay, and fundamental aspects of Hindu law, that is the Perumal versus the Ponnuswamy case, that also we will see here। okay, so you just go through what you have written, seta first dekhantu, if you have any doubts take 2 minutes, okay, ask me your doubts, else we'll go to this part। ग्रुप रे लिंक दोची, ओके, कहना हम से केस टा भी डिस्कस करिवा।
Okay, let us now continue. So next question asila amar sorry group रे जो माने अछंती एटा देखो से जो येशुदास को कथा मु कहूची ओके आपण समस्त तां गीत सुनिथिबे मे बी ताको नाटा मे बी के जण जानि नथिबे तो दिस इज ए ड्यूक बॉक्स ओके ऑफ हिज सॉन्ग्स ओके तो आमे जो केस टा एबे ही बेसिकली वाज ए कैथोलिक पर्सन ठीक अछि तो से कैथोलिक लोक थिले बट से कोर्ट रे कहले कि लाइक मोर बिलीफ टा हला बिकॉज ही यूज्ड टू सिंग अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स डिवोशनल सॉन्ग्स से कहले कि मोर बिलीफ टा हिंदू ओके बिलीफ संगे समान आउ मु ए हिंदू गॉड और गॉडेसेस को से हिसाब रे प्रे करू जे एंतो हिंदू प्रे करू सो आई डोंट नीड टू कन्वर्ट मते शुद्धि करबा दरकार नै आई डोंट नीड एनी काइंड ऑफ रिलीजियस सेरेमनी टू कन्वर्ट मी ठीक अछि आई बिलीव एंड मु सेटा ओके क्लियरली कहूची डिक्लेयर करूची सो हिंदू बाय डिक्लेरेशन सेटा में देखिबा ओके सो एनीवे सेटा फ्री टाइम में देखिए वेरी सूदिंग म्यूजिक तांकर सो नेक्स्ट हेडिंग दियंतु कन्वर्ट्स एंड रिकन्वर्ट्स टू हिंदुइज्म ओके कन्वर्ट्स एंड रिकन्वर्ट्स टू हिंदुइज्म converts and reconverts to Hinduism. Okay. So first, like we discussed, first point lekhantu under Hindu law, and this is very important. Kaina ei basic principle re बहुत जिनस आगु को आमे देखिबा हमर जो वेरियस कोडिफाइड हिंदू लॉज अछि एटा केमिति काम करछि ए पर्टिकुलर जनरल प्रिंसिपल टा सो टेक डाउन अंडर हिंदू लॉ a person does not lose his faith okay under Hindu law a person does not lose his faith does not lose his faith by mere renunciation of it okay by mere renunciation of it renounce करिया माने कोन voluntarily त्याग कर देबा ओके like in constitution we will study okay खाली ही mostly हमें सेटा देखिबा कोन citizenship रे renunciation of citizenship भाई मते इंडियन सिटीजनशिप दरकार नै मु मो इच्छा रे छाडी दोछ ओके गोटे तो हेई पारे कि गवर्नमेंट मते बाहर कर दबो सिटीजनशिप नै जियो मोटू गोटे हला मु निज स्वेच्छा रे सिटीजनशिप छाडी दो renunciation means leaving something okay renouncing something giving away something voluntarily ठीक है so suppose I say that well you know I give up Hinduism so technically speaking unless I convert to another faith okay non-Hindu faith I will be considered as a Hindu ठीक है so under Hindu law a person does not lose his faith by mere renunciation of it okay if I stop practicing it मंदिर जिबा 50 वर्ष होला मंदिर जाइनी धरंतु okay no one can tell that you know this person is not Hindu okay केही भी सेटा कहि परिबे got it yes sir तापरे नेक्स्ट पॉइंट लेखंतु सेही तरे further he does not belong to another faith further he does not belong to another faith further he does not belong to another faith by merely professing it or practicing it
by merely professing it or practicing it. Okay, so suppose जोड़े हिंदू लोक अछंती सीए कहउचंती कि मु ए पर्टिकुलर रिलीजन को ओके से रिलीजन रो जो आइडियल्स गुडा अछि राइट से गुडा मु एबे फॉलो करूची. So merely by professing or practicing another faith, okay, he does not cease to be a Hindu. ठीक अछि. And this is one of the major reasons that in some states, okay, जो माने especially scheduled tribe रे अछंती से माने जदी कन्वर्ट करूचंती ओके क्रिश्चियनिटी को कि अलगा को रिलीजन को से माने स्टिल scheduled caste scheduled tribe हिसाब रे ट्राइबल हिसाब रे से माने बेनिफिट्स पाई पाउचंती. Okay, that is a contentious issue. It varies from state to state. Okay, but this is one of the interpretation because since a Hindu does not lose his faith by merely professing or practicing another faith, so okay, seta gote jinsa roch. That also you have to remember. Okay, so these 2 points just mark it as important. Kahinki na आगु को जाएंगे केते गुडे हमें डिसीजंस और केते जिंस देखिबा जार प्रीमाइस हैला एटा जार फाउंडेशन हैला ए दिटा पॉइंट. Okay, so that means under Hindu law, a person does not lose his faith by mere renunciation of it. Further, he does not belong to any other faith by merely professing or practicing it. He still remains a Hindu. Okay, so next point. The Dharma Shastras did not prescribe any ceremony for conversion to Hinduism. Dharma Shastra लेकिन ये लोगों को ऐसा करो. You see now, एबे कौन एबे सेटा customs रे आसिला बहुत परे. ठीक अछि तो काहे कि ना initially I told you first class जारा मने थिबो Hinduism is not a missionary religion. एठी जो माने initial जो माने सब लोक थिले ओके जो माने आ ऊपर लेखा लेखि करथिले से माने कंटेम्पलेट की भाबी नथिले कि आमे बाहर लोकों को आनी की तांको हिंदू बने दो. So it is not a missionary religion. Okay, unlike many other religions you will find. Okay, almost all other religions they are missionary. अपना कोई परियो किछिरा को छाड़ दे. ठीक अछि, but Hinduism is not a missionary religion. तारो एम टा नुह कि भाई अधिका रु अधिका लोक कन्वर्ट हे जानतु मोर रिलीजन. ठीक अछि, जे कन्वर्ट होची वॉलंटरली होची. वेस्ट रे बहुत जण होचंती, रशिया रे बहुत जण होचंती. यू सी आमर जेति की डिवोशन अछि माने विथ ड्यू रेस्पेक्ट इस्कॉन वाला ताठू आपण देखिबे बहुत जगह रे बहुत अधिक डिवोशन अछि. ओके जो लेवल रे बट एनीवे से जा भी हो सो एटा वॉलंटरली होची जा भी होची फोर्स के करनांती. You come and convert and you get some okay monitor them induce कराओनी कि भाई तुम्हें you know if you become a Hindu you will get this and this and this education मिल जियो एटा मिल जियो सेटा मिल जियो. Okay, so from the very beginning it is not a missionary religion, right? So the Dharma Shastras did not prescribe any ceremony for conversion to Hinduism. जेहेतु customary law रो Hindu custom जोड़ा हमें आगु पढ़िबा sources of customary law. The sources of customary law रो Dharma Shastras हेले one of the most important sources. Okay, so take down next point. The Dharma Shastras did not prescribe any ceremony for conversion to Hinduism. Did not prescribe any rituals or methods for conversion into Hinduism. Okay, तामाने सेमती किछि prescribed method नहीं, right? Locally हमें कहले for example someone wants to convert to Hinduism and all, तो हमर एठी locally ओडिसा रे कोन कराउची आपण जति जो माने most people we believe in मुक्ति मंडप. ओके जगन्नाथ मंदिर रे अछि तो सेठी जो माने अछोनी तांको पचारे से माने किछि ओडे कोंती. ओके बट सेटा प्रेस्क्राइब नाही कोठी कि हां एई मेथड ही आपण फॉलो करियो, राइट? सो द धर्म शास्त्र्स डिड नॉट प्रेस्क्राइब एनी रिचुअल्स और मेथड्स फॉर कन्वर्शन इनटू हिंदुइज्म बिकॉज़ तांको मुंडे रे नथला कि हमकु कन्वर्ट करेबार अछि लोकन को कि अलगा रिलीजन रो लोक हिंदुइज्म को कन्वर्ट हेबे. ठीक अछि, जे विश्वास कला त ठीक अछि ताको मानि दियो हिंदू बोली जहा कोर्ट कहउचंती ए जिंसटा. तो सेटा प्रथम रो भी थिला. ओके, खाली गोटे एक्सेप्शन अछि
the Arya Samajis. Okay, the Arya Samajis, ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ସେକ୍ଟ ଆପଣ କହିପାରିବେ, ଡିନୋମିନେସନ ଗୋଟେ, ବଟ୍ ସେଥିରେ କଥାଟା ହେଲା ସେମାନେ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେମାନେ କରନ୍ତି. Okay, if a person he wants to become a Hindu through the Arya Samaj, through the rules and ତାଙ୍କର ଯାହା rituals ଅଛି, so they provide for that. Okay, so next point, among the Hindus it is only the Arya Samaj, okay, who prescribed a ceremony for conversion known as Suddhi. Okay, only the Arya Samaj prescribes a method for conversion into Hinduism called Suddhi or purification or cleansing. Suddhi mane kon? Purification. Okay, or cleansing. ठीक. So कोर्ट भी जिनसटा मानिचंती, ओके, कि गोटे नॉन हिंदू से हिंदू केमती हबो, so he has to undergo ceremonies of conversion. Okay, so next take down, a non-Hindu becomes a Hindu if he undergoes the ceremonies of conversion. A non-Hindu becomes a Hindu if he undergoes the ceremonies of conversion. Okay, so next, तो ये जो हमें कहूँ हिंदुइज्म, ओके, कोड जोड़ा कहूँ हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लिविंग, तारा आउ गोटे एग्जांपल हला कि द लिबरल इंटरप्रिटेशन रा एग्जांपल हला इन वेरियस केसेस सुप्रीम कोर्ट एटा कहछन जने जदी हिंदू रीतिनीति हिसाब रे से रहउची, बिलीव्स को मानुची, ओके, आउ से कम्युनिटी रे रहउची, आउ से जहां से अलगा कम्युनिटी मेंबर्स करछदी से भी से करूची, ताहले जदी तार किछ गोटे फॉर्मल कन्वर्शन सेरेमनी हेनी, ओके, तथापि ही विल बी ए हिंदू. Okay, that means in other words, a formal, just upon a point देखिले, a non-Hindu becomes a Hindu if he undergoes the ceremonies of conversion. जदि ceremony of conversion न भी हला, but सिए रहुची गोटे हिंदू बलिया, beliefs करिका तार हिंदू बलिया अछि, okay, practice करूची, profess करूची, आउ that is quite evident, okay, to the community, okay, जोटी से रहुची, so सेठी आउ, ओके, ता इंटेंशन ऊपर भी किछि सस्पिशन नाही, ताले सही जगह रे ऑब्वियसली सी, ओके, हिंदू बोली ताकू कोर्ट मानिबे, इवन इफ ही हैज नॉट अंडरगोन एनी काइंड ऑफ प्यूरिफिकेशन और कन्वर्शन सेरेमनी. ओके, सो किछि रिचुअल्स जदी हेनी ताकू आ कहि परिबनी ये यार हिंदू नुह बोली, बुझि परले. सो नेक्स्ट टेक डाउन, इन द लैंडमार्क केस ऑफ पेरुमल वर्सेस पोन्नुस्वामी, Supreme Court 1971, in the landmark case of Perumal versus Ponnuswamy,
Okay, Supreme Court 1971. The court held that if a person has accepted if a person has accepted the Hindu way of life, underline that, okay, Hindu way of life, comma, he will be considered as a Hindu even if or even in the absence of conversion rituals or ceremonies. Okay, तापर से elaborate करछन्ते हिंदू way of life टा कोन. Okay, so beliefs, okay, and से practice करूची, profess करूची, अन्य माने से मिसी की रहूची, अन्य माने भी जो माने हिंदू से माने भी देखि कि से माने ताकू निज one of them से माने ताकू consider करूचंती. Okay, so the community in which he is living, they don't have any, okay, apprehension about his motives. Okay, so there is consensus in the community. Okay, ताहले किछि असुविधा नहीं था, right? So it is not required that some formal conversion ritual etc has to be, okay, done. Which pale? Sir, just one question. हाँ, कौन? Sir, ताले vice versa काहे होनी काहे कि ता पूर्वरु आपण कहले जे further he does not belong to another faith by merely professing it or practicing it. कौन कहले? Sir, मु कहले जदि ए केस से कुहा गला जे सी in the absence of conversion rituals or ceremonies रे भी हिंदू बोली ताको कहि हबो जदि सी practice करछि हिंदू way of life ताहले हाँ, vice practice versa sir करूची काहे आउ गोटे important जिंस सेतरे हैला community agree करिबा कथा. Okay, the community satisfied जोटी रहूची से community satisfied with that. Okay, एई दिटा केस जदि होची ताहले you can say that he is a Hindu. But sir, the vice versa ताते काहे होनी काहे कि ता पूर्वरु आपण conversion भी converts to Hinduism रे ए point भी कहले that further he does not belong to another faith by merely professing it or practicing it. हाँ, it means a Hindu basically एटा में हिंदू लो पडुची गोटे हिंदू लोक सीए जदि प्रोफेस करूची प्रैक्टिस करूची आउ गोटे रिलीजन को, ठीक अछि, तो सीए Yes, sir. सीए से रिलीजन रो ही जाउनी सेटा काहे कि वाइस वर्सा ही पाउनी काहे कि ना like see there are certain religions which are based on strict tenets. Okay, if you are to be a particular religion रो आपनकर लोक होइतिबे ताले एई 6 टा पॉइंट आपण एई मैट्रिक्स आपण, ओके, ताकू you have to tick all the check boxes. Okay, गोटे क्वालिफिकेशन टाइप रो से सब जक आपण फॉलो करचंदी फिट होउची ताले आपण से पर्टिकुलर रिलीजन रो बोली हमें कहि परिबा. ओके, हिंदुइज्म रे सेमति हमें डेफिनेशन देई परिबा. ओके, दैट इज व्हाई ए जो टर्म टा कहला ए जो कांसेप्ट टा आसिला इट इज ए वे ऑफ लाइफ रादर देन ए स्ट्रिक्ट रिलीजन. एटा मल्टीपल केसेस से सुप्रीम कोर्ट कहचंदी वे ऑफ लाइफ. ठीक अछि, Yes, तो sir. से हिसाब रे से हिंदू अलगा जदि रिलीजन रो माने ताकू एक्सेप्ट करिकी आउ ताकू प्रोफेस करबा स्टार्ट कर देला अनलेस, ओके, देयर हैज बीन सम काइंड ऑफ ए यू नो टेक्निकल और रिलीजियस सेरेमनी जो थर की से कन्वर्ट करची से खाली प्रोफेस कला तो से हिसाब रे से ही डज नॉट सीज टू बी ए हिंदू. ठीक अछि, बट Okay. सेटा वाइस वर्सा माने सेटा अलगा रिलीजन रो हिंदुइज्म को आसे भाई से कांसेप्ट ना नहीं, कहना अलगा रिलीजन बहुत बड़े अलगा रिलीजन से माने से रिलीजन रे जदी आपण तार गोटे मेंबर अछंती ताले देयर आर सम स्ट्रिक्ट रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो.
ओके जोटा कि एठी नाही एठी ओवरऑल रूलटा जोटा हमें देखिलु हु इज ए हिंदू रे कि एनीवन whose ultimate aim is realization of self सी हेला हिंदू Yes, sir. ठीक है Thank you, sir. that is the thing okay so that is why they have not given even the court has not given actually court को काम नुह कि religion रे पसी कि religious interpretation करिबा सेटा theologist को छाड़ दवा कथा okay for example एबे hijab case रे that is one of the important crux of the matter ki whether the court is competent okay to say that these things are not or these things are essential part of the religion okay तो court रो कहया कथा सेटा आमे कहूनु सेटा आमे से सब थियोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिकि से माने बाहर देशर सब थियोलॉजिस्ट माने कोन कहिसेंदी ताकू एग्रीगेट करिकि हमें कहू ओके एटा आमे कहूनु सुप्रीम कोर्ट कहूनी कि ए जिंस हला ए रिलीजन रो एसेंशियल कि नहीं से रिलीजन रो जो सबुटू हाईएस्ट जो प्लेसेस उडा अछि से जगह रे से गुडा माना होनी ओके सो दैट इज द कांसेप्ट एनीवे बुझि परले यू डाउट इज Yes, क्लियर sir. Yes, sir. Thank you, sir. बुझि परले सो एटा टिके अंडरलाइन करंतु दिस पर्टिकुलर केस लॉर्डर okay he will be considered as a Hindu even in absence of conversion rituals or ceremonies subject to the satisfactory acceptance or not to his satisfactory acceptance by the local community and Hindu community okay এই জিনিসটা যে কমিউনিটি হ্যাজ টু অ্যাকসেপ্ট কেন সে তাଙ୍କ ভিতর রহিলা এদিন রহিলা তো ସେମାନେ জানি পারিবে তা অ্যাক্টিভিটিস কোন ସେମାନଙ୍କର କିଛି ସସ୍ପିସନ ନାହିଁ ଦେ ଟ୍ରିଟ୍ ହିମ୍ ଆଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ देयर ओन ओके सो ତାକୁ କିଛି ଗୋଟେ पर्टिकुलर फॉर्मल कन्वर्जन କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଥିବ ସେମିତି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ओके गॉट इट राइट तापर नेक्स्ट पॉइंट लिखंतु जो जिंसटा कहउतली तो एई जो चारटा रिलीजन भितरे जोटा हम कोडिफाइड हिंदू कोड रे जोटा हमर अछि ता भितरे जदी जने कन्वर्शन करूची कि रिकन्वर्शन करूची से स्टिल हिंदू हिसाब रे ताको अपन नउचन ओके सो अंडर द कोडिफाइड हिंदू लॉ अंडर द कोडिफाइड हिंदू लॉ under the codified Hindu law, any person converting to Hinduism, Jainism, Buddhism, or Sikhism is considered as a Hindu. Is considered as a Hindu. Okay. आउ दीटा पॉइंट भी अपन को लिखिबार अछि एतरे दैट विल कंप्लीट दिस डिस्कशन ओके a person who is a reconvert to Hinduism, Jainism, Buddhism or Sikhism, a person who is a reconvert माने से आगुरु गोटे धर्म रे थिले ठीक अछि से आ गोटे धर्म को पळेले तापर पुनी ओके वन ऑफ द हिंदू रिलीजन्स को आसी गले ओके तो सेटा भी आपण को रिकन्वर्शन रे जाउछ सपोज पर्सन ओरिजिनली वाज अ हिंदू okay then he had become okay a Christian
now he has become a Buddhist. Okay, तो ये भी आपको रिकन्वर्शन कथा ही अपना कहिबे ओरिजिनली फुनी तांको रिकन्वर्ट करिया दरकार ने इनटू हिंदुइज्म जदि से बुद्धिज्म सिखिज्म की जैनिज्म को भी रिकन्वर्ट करिवे ताले आल्सो ही इज treated as a reconvert to Hinduism. Okay, a person who is a reconvert to Hinduism ओके ये जो हिंदुइज्म जैनिज्म बुद्धिज्म सिखिज्म ओके शॉर्ट करिया पे मु ताको लिखि दउची HJBS ओके सो दैट यू नो शॉर्ट हम सारी परिया जल्दी a person who is a reconvert to HJBS okay okay is considered as a Hindu both under uncodified Hindu law and under codified Hindu law is considered as a Hindu both in uncodified and codified Hindu law. ठीक है एटा फर्स्ट पॉइंट आउ सेकंड पॉइंट रो डिफरेंस देखंतु फर्स्ट पॉइंट रे से कहला ओनली कोडिफाइड हिंदू लॉ एनी पर्सन कन्वर्टिंग टू ओके द एचजेबीएस रिलीजन ता माने कोन से कोडू कन्वर्ट कला से नॉन हिंदू रिलीजन रो कन्वर्ट करछु मे बी लेट्स से क्रिश्चियनिटी रो कन्वर्ट करले कि इस्लाम रो कन्वर्ट करले से केस रे हमें फर्स्ट केस ता दोछु सो दैट विल बी ओनली ओके इन द आईज ऑफ द कोडिफाइड हिंदू लॉ ठीक अछि ही विल बी ट्रीटेड एज ए हिंदू राइट a person who is a reconvert to HJBS okay reconvert माने से आगुरु ओरिजिनली मे बी हिंदू थिले कि सिख थिले कि बुद्धिस्ट थिले कि जैन थिले तापरे से गोटे नॉन हिंदू रिलीजन को कन्वर्ट करिसेंती तापरे अगेन ही इज कन्वर्टिंग बैक टू वन ऑफ दिस फोर रिलीजन्स ओके तो एटा मन रखिबे जोटा तांगर ओरिजिनल रिलीजन थिला सेठी कि न फेरले भी चलिबो सपोज पर्सन वाज ओरिजिनली हिंदू देन ही बिकेम ए क्रिश्चियन नाउ ही इज बिकमिंग ए बुद्धिस्ट सेटा भी रिकन्वर्शन रो केस होबो ओके तो सही केस रे बोथ ओके अंडर कोडिफाइड लॉ एंड अनकोडिफाइड लॉ से हिंदू हिसाब से देखे जो अनकोडिफाइड हिंदू लॉ रो आउ किछि हमर सेमिति लीगली सेमिति एते किछि दरकार नाही ठीक अछि इट इज नाउ रेगुलेटेड बाय लॉ ओके कोडिफाइड हे जेछि तो सब कोडिफाइड लॉ हिसाब रे चलछि बुझि पारले तो ए दीटा डिफरेंस ओके दिस द डिफरेंस बिटवीन दीस टू पॉइंट्स ओके तापरे लास्ट for reconversion to Hinduism, no particular ceremony or any rite is necessary. Okay, तो किसी वाले ritual सोड़ा किसी दरकार नहीं. For reconversion to Hinduism, for reconversion to Hinduism, no particular ceremony or ritual is necessary. Ceremony or ritual is necessary. No particular ceremony or ritual is necessary. गोटिए तार एक्सेप्शन अछि कोन सी देयर आर मेनी पीपल जेतेबेले ना से माने कन्वर्ट करंती दे रिकन्वर्ट इनटू ए पर्टिकुलर कास्ट आल्सो सो बहुत जगह ऐसे कास्ट रो किछि पर्टिकुलर रूल्स थाए ओके कि ए कास्ट रे आसे पे आपनकर ए सेरेमनी दरकार ओके इज नेसेसरी द ओनली एक्सेप्शन बीइंग
requirement the only exception being requirement of joining a particular caste. हिंदू हवा पाई रिकन्वर्ट करिया पाई किछि सेमति सेरेमनी नै बट गोटे पर्टिकुलर कास्ट रे जदि से पुनी एंटर करिया पाई चाहउछथि तांकर किछि सेरेमनी रहि थाई पारे ओके सो दिस इज बेसिकली converts and reconverts to Hinduism. Okay, that part is over now. Last part ajiro discussion ro that will be based on so एटा में देखलु कोन Hindu by birth okay Hindu by birth को जाइनु Hindu by religion okay converts and reconverts to Hinduism and now we will see Hindu by okay declaration. If I declare that I may be from any other religion but my beliefs okay are in tune with the Hindu religion मु सेटा डिक्लेयर करूची सेटा ठीक अछि ताले will I be considered as a Hindu so in various court rulings Supreme Court has accepted that कि हां जे डिक्लेयर करूची कि तार हिंदू बिलीफ्स अछि आउ डेमोन्स्ट्रेट भी सेटा करि पाउची तार यू नो कि अल्टेरियर मोटिव नाही ताहले ओके किछि प्रॉब्लम नाही से एटा क्वेश्चन थिला टेंपल एंट्री रो ओके जहां प्लेलिस्ट मु देली अपन ग्रुप रे वेरी फेमस सिंगर यशोदास तो सीए मंदिर रे गीत गाउथले तो तांकु गोटे मझिरे कोन हैला पर्टिकुलर मंदिर रे तांकु अलाउ कलेनी एंटर करिया पे केरला रे ओके काहेकि ना आपण हेले कैथोलिक बोली तो से हिसाब रे कोर्ट को गले हाई कोर्ट को आ सेठी कहले तांकर केरला हाई कोर्ट रे कि मु सब जिंस मु डिक्लेयर करछि कि मु सब बिलीफ्स ओके हिंदुइज्म रो सब बिलीफ्स ही मानुछि सो आई मे बी ट्रीटेड एज अ हिंदू and I should be allowed to go to the temple. So court se kahila tha. Okay, it was in his favor, right? So next heading take down Hindu by declaration. Hindu by declaration. Hindu by declaration. Okay. So এটা হেলা famous case of Mohandas versus Devaswan board. Okay, Devaswan board तो Devaswanam board भी दाउ कोंदी mainly कोन हमर जेमति सब टेंपल ट्रस्ट रो थाए. Okay, तो साउथ इंडिया रे mainly केरला हमें जोटा एबे कहूचु सेटा ब्रिटिश पीरियड रे that was Travancore state. Okay, Travancore state सेटा थिला ठीक अछि से Travancore रो okay princely state of Travancore. So ସେଇଠୁ ଏ ଜିନିଷଟା ଆସିଛି ଦେବସ୍ୱାମୀ ସେଟା ଟେମ୍ପଲ ବୋର୍ଡ ଯୋଉଟା ସୋ ନେକ୍ସଟ ଟେକ୍ डाउन तो एई जो दीटा केस आपण देखुचंती गोटे तो हैला ओके पेरुमल वर्सेस पन्नुस्वामी सेटा गोटे बहुत ही लिबरल इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदुइज्म को नियाला सुप्रीम कोर्ट कले ठीक अछि तापरे नेक्स्ट हैला एई जो पर्टिकुलर केसटा ओके यू विल फाइंड दैट लॉट मेनी यू नो केसेस रिलेटेड टू हिंदुइज्म ओके कम फ्रॉम केरला ओके आपण सेटा भाबुती कोन पई सेमती हेजी केरला एबे आपनकर कम्युनिस्ट रूल अछि किंतु आगुरु ओके ब्रिटिश पीरियड आगुरु इट वाज यू नो बहुत ही सेटी मेजर टेंपल्स थिले एंड इट वाज अ वेरी स्ट्रांग आपण कहि परे सेटी रिलीजियस तंगर यू नो डिनोमिनेशंस वरिका थिला राइट इनफैक्ट दे वर वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट्स ओके वन ऑफ द मेन रीजन काई की हिंदू लॉ कोडिफाई हैला और हिंदू टेंपल्स गुड़ा गवर्नमेंट ता कंट्रोल ले गला बिकॉज बहुत बहुत पैसा थिला तिरुपति रे पटे सेपटे तांकर लॉट ऑफ टेंपल्स वर देयर इन केरला ओके दोज आर वेरी रिच ठीक अछि त सो एई दीटा केस टिके मन रखियो वेरी लिबरल इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदुइज्म जोटा कि हमें आगु को जाय कि सुप्रीम कोर्ट कहले एटा वे ऑफ लिविंग इट इज नॉट अ स्ट्रिक्ट रिलीजन लाइक मेनी अदर रिलीजन्स हिंदुइज्म इज नॉट अ स्ट्रिक्ट रिलीजन ठीक अछि सो टेक डाउन फर्स्ट पॉइंट in Mohandas versus Devaswan board okay that is in 1970 এটা সুপ্রিম কোর্ট কেস নো এটা কেরলা হাই কোর্ট কেস okay in Mohandas versus Devaswan board
Okay, Kerala versus Devasanam Board, that is 1975. Okay, 1975. The Kerala High Court held that any person who held that any person who openly declares that he follows the basic principles and tenets of Hinduism can be considered as a Hindu. Okay, so it is Hindu by declaration. Okay, right? Yes, sir. कौन ताले देखिए कथा इधरे what are the precautions to be taken? The intention has to be bona fide. Malafide intention ରହିବା କଥା no. Okay. And out of devotion and goodwill. ठीक अछि otherwise जदि ताकर किछि मैलाफाइड इंटेंशन अछि कि से टेंपल प्रीमाइस को हार्म करिवे कि द फीलिंग्स ऑफ द हिंदूज ताको हार्म करिवे जदि सेटा जणा पडछि ताहले ओके दैट इन दैट केस सेटा तो इंटेंशन ता तार क्लियर थिबा दरकार जणा पडथिबा दरकार सेटा ओके एग्जांपल टा हैला जो जो केस टा नेलु ओके हिज एक्चुअल नेम कार येशुदास करो राइट Yeshudas was not his actual name, so acquired name that. Okay, his actual name was or is okay Mohandas, right? So এই জিনিসটা কোড তাকু দেখিব okay so this is the famous case of Yeshudas, right? So now coming to the summary of this, that is Hindu by declaration kiye hi paribe. Okay, so and this is by eta hela codified Hindu law, modern Hindu law. Okay, customary Hindu law re declaration a concept nahi, ठीक है. So just take down under modern Hindu law, under modern Hindu law a non-Hindu will become a Hindu by conversion under modern Hindu law. A non-Hindu can become a Hindu by conversion in the following three cases. Okay, in the following three cases. Now first in the first case, formal
Okay, conversion or reconversion, right? Formal conversion or reconversion ceremony jodi se participate, he undergoes a formal conversion or reconversion ceremony. Okay, so first hela he undergoes a formal. Already we have seen Hinduism को convert କରିବା ପାଇଁ formal conversion ceremony ଦରକାର ନାହିଁ, ଯଦି caste specific କିଛି ceremony ଅଛି ସେଟା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ. He undergoes a formal, okay, ceremony for conversion or reconversion. Okay, এটা হলো number 1. Second হলো, second point, he expresses a bona fide intention, okay, to become a Hindu, accompanied by acceptance of the local community. Okay, he expresses a bona fide intention he expresses a bona fide intention of he expresses a bona fide intention of joining Hinduism with acceptance of the local community acceptance of the local community into the fold of which he was ushered in, into the fold of which ବୁଝିପାରିଲେ? That means जो local community रे okay से रहुचंती, right, से लोक माने obviously तांकर daily activities देखुचंती, okay, तो से माने जदी they are okay with it, they have faith on him, ताहले ताको किछि conversion से सब जिंस दरकार नै. तो नंबर 1 हला formal ceremony रे जदी से convert की reconvert हेचंती, number 1. Second, formal ceremony हेनी but he has joined and he has won the trust of the local community, ताहले हे परिबो. और थर्ड कोट केस टा जोटा में यशुदास करे देखिलो, declaration, okay, Hindu by declaration. If he declares, okay, in goodwill, okay, that he is a Hindu, okay. So number 3, if he bona fide declares that he is a Hindu. Which वाले? Now you go through first through देखंतु कौन कौन हमें, okay, लिखिचंती आपण, and go through it. If you have any doubts you can ask. Take down the question to write for the homework. इटा जो मैंने पठाउछंती, you send it to me as one PDF file. Either मते personally WhatsApp करंतु नले से जो submission link रे दे देबे. Submission link रे दबाटा भलो, कहीं ना WhatsApp रो कोन होई कि मोर 7-8 दिन पर से ओके ता भीतर ट्राई करबी आपनकर करेक्ट कर दबे, किंतु सेठी रहले
एनी टाइम आई ओपन दैट सेट आउ डिलीट हवार चांस है ओके व्हाट्सएप रे किछि दिन परे सेटा ऑटोमेटिकली सेटा अनलेस आप डाउनलोड करिवो से डिलीट हेजो सो टेक डाउन with the help of relevant case laws discuss discuss the ways in which a non-Hindu can convert or reconvert to Hinduism. Okay, so both the important cases, Mohandas, okay, how Pannuswamy, ए दीटा केस आपण कोट करिवे एतरे आउ जदि अधिका भी कोट करि परिवे किछि प्रॉब्लम नहीं ओके सो यू गो थ्रू इट एंड राइट इट एंड सेंड इट टू मी आउ भी गोटे जिंस ऑब्जर्वेशन लेके जनक प्लेन पेपर रे लेखि पठौ जंती प्लेन पेपर रे लेखंतु कना आपण ओजेएस पेपर टा ओके रूल्ड पेपर सो यू राइट यूज रूल्ड पेपर ठीक अछि रूल्ड पेपर रे लेखंतु ताले आपण एग्जाम रे जंती पेपर पाउजंती से हिसाब रे प्रैक्टिस टा फर्स्ट रू हम बुझ पाले so if you have any doubts you can ask else we'll stop here okay so tomorrow morning we will continue with the constitution okay constitution ro au jeti ki parts roila important year that we will finish okay and next we will start with the preamble to the constitution seta important part ta gote तो तार भी केतेटा केसेस अछि जोटा हम जानिबार अछि whether it's a part of the constitution or not सेगुडा को केसेस रे कोन सुप्रीम कोर्ट कहिछ ओके सो if there are any doubts okay 2 minutes रे पचरंतु otherwise we'll stop for today सर ये क्वेश्चन रो आंसर पई केस लॉस डिस्क्राइब करार अछि सर माने केस लो हमें एग्जाम रे केमिति लेखिबा तार ओटा लेखिबार स्टाइल अछि ओके बोल होला पचार देले तो केस लो रे दीटा जिंस आइदर आपण जदि समय नहीं तो खाली लेखि देबे कोन कोर्ट कहिछ नहले जोटी एनालाइज करिया पे पड़े केस लो गोडा ओके सेठी हमें तीनटा जिंस रुहे सेतरे फर्स्ट हला कि व्हाट वाज द क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट ठीक अछि इशू कोन थिला कोर्ट सामना कोर्ट कोन क्वाइटला डिसाइड करिया पे से क्वेश्चन टा फर्स्ट हमरो दरकार ओके जन टिके मते डीपर एनालिसिस करिवार अछि केस लो प्राय कोन हुए सुप्रीम कोर्ट कोन कहितला कि हाई कोर्ट कोन कहिला तांकर फाइनली ओके से कोन वर्डिक्ट देले सेटा हमें लेखु किंतु आउ टिके बेटर एनालिसिस पई कोन से ओके व्हाट वाज द क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट सेटा हमें फर्स्ट लिखिवार अछि ओके तापर सेकंड हला important observation by the court okay important observation is different from the final verdict आउ से observation रे ही मेजर जिंस उडा रे जेंति कि हमें डेफिनेशन ऑफ हिंदू हमें पढिलु सेठी हमें जनरली कहि देलु हां कि जस्टिस गजेंद्र गदकर से एया चेष्टा कले प्रथमे गोटे ब्रॉड डेफिनेशन हिंदुइज्म रे दबार चेष्टा कले बट जदी एग्जैक्टली हमें लिखि परिबा कि किछि कोट कर परिबा गोटे कि दी लाइन से कोन कहिसंती ताले एनालिसिस ता और बेटर हो सेगुडा 25 मार्क्स क्वेश्चन पे हमरो दरकार ठीक अछि जदी अपन 25 मार्क्स क्वेश्चन पढुची then you can go for that kind of analysis otherwise 15 mark question जदी आसुची 10 mark question जदी आसुची ताले जस्ट खाली कोड कोन कहिसंती मते सेति की कहबार अछि बुझि परले तार स्ट्रक्चर ता
सो एठी हमें कोन करबा ना जस्ट यू राइट कोर्ट कोन कहिले से केस फाइनली व्हाट द कोर्ट हैज सेड ओके बट you know the for example Yeshudas ka case re tankara court was to decide whether he should be allowed to temple entry case thila okay Yes. he is a very famous singer and he used to sing lot of devotional Hindu songs okay and he declared before the court that he was following all the beliefs Hindu beliefs and he should be allowed to enter the temple ठीक अछि so court सेटा मानिले केरला हाई कोर्ट सेटा मानिले तो सेटा आपण लिखि परबे राइट Okay. किंतु मत मो पाखे जदि समय नाही हेबे ताले मु कोन करबी जस्ट खाली एतिक लेक्चर अछि कि एई केस रे केरला हाई कोर्ट कहले कि जदि गोटे लोक तर किछि फॉर्मल तर हेनी कन्वर्शन सेरेमनी बट से डिक्लेयर करूछि बोनाफाइड डिक्लेयर करूछि विदाउट एनी इल इंटेंशन कि से हिंदुइज्म को से बिलीफ रे से मानुछि ताले सेटा हैला दैट इज ओके ही विल बी कंसीडर्ड एज अ हिंदू ओके एंड हिंदू को जहाँ भी प्रिविलेज अपन दउचंती ताको अलाउ करचंती हिंदू टेंपल को जिया पई आकु भी अलाउ करिवे ठीक अछि ओडिसा रो भी केसेस अछि ओके देयर इज वन पर्टिकुलर केस वेयर इस्कॉन महंत ओके तो सेपटे नॉर्थ इंडिया साइड रे हमें जो पुजारी को जो महंत कोजंती से महंत से ही वाज यूरोपियन ओके बट ही वाज हिंदू बट ही वाज नॉट अलाउड टू एंटर हियर तो ऑल्दो कोर्ट रो रूलिंग ता फेवर रे थिला तथापि पुलिस कुड नॉट यू नो ताको इंप्लीमेंट करै पारले ठीक अछि सो ऑल्दो एटा केरला रे ही पारला बट कथाटा हैला सब जगह रे न ही पार राइट तो एठी तो बहुत बड़ बड़ लोकों को भी फेराइछ ओके डिग्निटरीज इंटरनेशनल लोक मान को भी एठी फेराइछ ओके एठी आउ भी केतेटा रूल्स अछि जोटा कि एक्चुअली ब्रिटिश वाला बनै नथिले एबे सेटा केमति कोन बनाई जाइछि फॉर एग्जांपल फॉरेनर्स बट ही इज अ हिंदू बट इज अ फॉरेनर तेथरे भी ओके प्रॉब्लम रहउछ आई थिंक जे थाईलैंड रो प्रिंसेस जेतरा आस्तिले ओके काना सेमानकर यू नो दैट तांकर सॉरी मु थाईलैंड कह देली कोरिया रो ओके साउथ कोरिया रो तांकर डायरेक्टली लॉर्ड रामंकर डायनेस्टी संगरे तांकर रिलेशन अछि ओके सो व्हेन दिस थिंग वाज बीइंग डन हमर जो राम मंदिर रे तळे हेला शिलान्यास सो से माने भी आस्तिले से पटो राइट बट तांको एपटे अलाउड हेलानी एटी भीतर बसतरियंस माने ओके तो हमर एटी टिके बहुत माने लोकल एटा बहुत ये जेछु बट दैट्स अ डिफरेंट मैटर वेदर वी शुड कंटिन्यू काहे ना हमें तो कहूछु लॉर्ड जगन्नाथ इज द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स so obviously we should allow everyone there are many big temples okay joti ki without any religious discrimination samast allowed option okay many jagannath temples are also there okay jotre all religions are allowed so that is a different matter seta आपको जदि कोन तार करि हबो but that would be a very good okay good actual secular country हमें कहि परिबा ठीक अछि of course there are other there is the other side also okay काहे कि एटा हितला से रीजन ता एबे बदे एते रहिबोनी केना इन्वेडर तो एबे चांस नै कि इन्वेडर आसी कि मंदिर को किछि गोटे कर दबो राइट सो एनीवे दैट वी हैव टू सी कोन बट गवर्नमेंट विल नॉट डिस्टर्ब इट ओके बिकॉज़ इट इज द वेरी अनपॉपुलर ऑफ राइट एनीवे बुझी पारले तो केमती आपण रेफर करिवे डिपेंडिंग ऑन द टाइम यू हैव एंड डिपेंडिंग ऑन केते मार्क से पकेछ ओके क्वेश्चन रे कोन होबो गोटे पार्ट न आस पारे दी तीनटा पार्ट आस पारे गोटे 25 मार्क क्वेश्चन तार तीनटा पार्ट अछि ऑलमोस्ट 8 मार्क्स पर पार्ट ताले मु जस्ट जेति के दरकार सेति के लिखिबे ओके सो एवरीथिंग वुड डिपेंड ऑन आपण बा के समय अछि सो आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग हमें तो एबे फुल ये स्टार्ट करिनु मे बी सेकंड वीक आरो को सब्सटेंशियल कॉन्ट्रैक्ट सर जाइतिबो ओके तापरे आरो भी सब्सटेंशियल पार्ट बाकर सर जाइतिबो सो वी हैव ए 3 आवर्स टेस्ट ओके 3 आवर्स कह देली आपनकर 150 मिनिट्स रो टेस्ट रहबो सेथरे गोटे दिनस मन रखिबे 150 मिनिट्स 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स सो 25 मार्क रो क्वेश्चन हैला 25 मिनिट्स में तो सारिवार अछि एबे आपण जा लेखुचंती सेटा सेही हिसाब रे प्रैक्टिस करंतु ओके नाउ यू कैन टेक सम लिबर्टी हां प्रथम थोर लेखुची तो टिके बढ़ी गला बट व्हेन वी स्टार्ट विथ द टेस्ट एंड ऑल तो सेतरे जेति की मार्क दोची सेति की मिनिट नेबे आपण को परीक्षा रो फॉर्मेट ता सेया ओके 150 मार्क्स 150 मिनिट्स so you have to prepare according to that fine so we'll stop here अच्छा जो माने से जो इंग्लिश रो माने से जो कंपलसरी इंग्लिश रो पेपर ता दिया इतला संडे दिन ग्रुप रे से टिके सॉल्व करो बाय नेक्स्ट संडे ओके
एई संडे भितरे मते पठांतु से डिफिकल्ट लागुची ट्रांसलेशन वरिका आई अंडरस्टैंड बट जहा आसुची लेखि पठांतु सो दैट आई विल नो कि आपनकर सेडी लैक्यूनाटा कोथरे अछि ओके सो विल स्टॉप हियर विल मीट टुमारो 8 o'clock okay ओके thank you सर Thank you, sir.